Let's start with a prayer. Take a deep breath. Please be aware of your heart and your crown. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to Master Choa Kok Sui, to Lord Maha Gurji Mailing, to all the great ones. We thank you for your blessings. Thank you for your guidance, your help, and protection. Thank you, Master, for your presence in the session. To my higher soul, my divine self, thank you for your presence. To the healing angels, healing ministers, thank you for your presence. To the angels of technology, thank you for your presence. To all of you who are watching, welcome to the session. Atma Namaste. All right, so let's begin. So today is our day 7, okay? Day 7 of the time management program. Is it already helping you all? Yes? How many of you feel that this is helping you to become more organized? You know, जो इसका effect आना चाहिए, it should make you feel as if you are becoming more organized, or you think that you have more time to accommodate things which you couldn't accommodate earlier. Yeah. तो आज हम लोग लास्ट 2 सेशंस में वी स्पोक अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कमिटमेंट्स और हाउ टू बिफोर वी कमिट एनीथिंग, यू नो. सो हाउ मेनी ऑफ यू डू यू फील आर गिल्टी ऑफ ओवर कमिटिंग? यानी कि हम लोग कमिट तो कर देते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि ओ नो, आई शुडंट हैव committed to it. Have you experienced this? How many of you? All of us, right? Including me. तो हम लोग सब ये एक्सपीरियंस करते हैं ना कि हम लोग कमिट तो कर देते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि नो, दिस वाज जस्ट नॉट पॉसिबल. ये एकदम भी पॉसिबल नहीं था और बहुत डिफिकल्ट लग रहा है टू बी एबल टू हैव दिस और टू बी एबल टू पुट इट अप. सो आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू अवॉइड ओवर कमिटमेंट्स और एक्सेसिव कमिटमेंट्स. मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अपने आप से पूछ सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग चेक कर सकते हैं. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी कैन आस्क एंड फ्यू थिंग्स दैट वी कुड चेक. सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 points that you need to remember, 3 things that you need to remember before you give a commitment so that you avoid overcommitment. Ready? Yes? 3 things we're going to discuss, a short talk, but personally this might help you a lot from getting disappointed by yourself. Normally क्या होता है, ओवर कमिटमेंट में हम लोग कमिट तो कर देते हैं, but who feels guilty later? We feel guilty later. We feel bad later because we also wanted to do it, but then we did not plan better, and then we feel guilty, and then sometimes our relationships get affected, sometimes our business relationships get affected. बहुत सारे इसके repercussions है, बहुत सारी इसकी है, लेकिन end of the day any over commitment makes us feel guilty. We find it difficult to execute. At the same time we find it difficult to let go. तो ऐसी जो स्टेट होती है वो बहुत ही खराब होती है. तो ऐसा इमोशन अगर हम लोग को नहीं चाहिए तो there are 3 things we need to check before we commit. Ready? So first one, the first thing, I'm just reading out from my notes. First thing, whenever you are giving any commitment to somebody else, जब भी आप कोई commitment किसी को दे रहे हैं, so the first thing you need to check is your schedule. See, हर commitment के पीछे एक excitement होता है, ठीक है. कभी कभी एक्साइटमेंट में आकर हम लोग कमिटमेंट तो कर देते हैं, बट द फर्स्ट थिंग यू नीड टू कैलकुलेट दैट हाउ मच फिजिकल टाइम इज इट गोइंग टू टेक टू एग्जीक्यूट. बहुत सारी चीजें हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपने कमिट की उसमें उतनी टाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोई भी चीज कमिट करें उसमें कुछ टाइम तो चाहिएगा. Everything is not energy. Everything also requires every execution. हर execution के पीछे कुछ physical time तो आपको invest करना ही पड़ता है. So before you kind of give any commitment, you calculate how much time is this commitment going to cost you. Let me ask you a question.
सपोज आपने किसी को कमिटमेंट दिया, आप किसी फ्रेंड से मिल लिए, ठीक है, यू वर इन अ कॉफी शॉप और वहां पे कोई एक फ्रेंड आपसे मिल लिया और वो फ्रेंड आपको बोला कि चलो चलो लेट्स कैच अप फॉर डिनर दिस वीकेंड, अपने सब मिलते हैं, लेट्स कैच अप। और आपका डिनर, आपका वीकेंड पर ऑलरेडी कुछ प्लान था एंड आपने जोश में आके, एंथुजियाज्म में आके उसको बोल दिया हाँ लेट्स कैच अप, ओके, और आपने कमिटमेंट उसको दे दी। अब उसका नेक्स्ट डे फोन आता है कि हे आर वी कैचिंग अप फॉर डिनर, अपने सब मिल रहे हैं ना, तो अब वो बोला हाँ हाँ ओके, फिर वो फ्रेंड आपको बोलता है ठीक है घर आ जाओ, ठीक है। अब उसने घर आपको बुलाया, सब चीज किया एंड देन सडनली ऑन दैट डे यू रियलाइज कि ओ माय गॉड आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ और कमिटमेंट रखी थी सैटरडे संडे के लिए और सडनली आप रियलाइज कर रहे हैं कि आपके पास उसके घर जाने का समय नहीं है। और नाउ दैट फ्रेंड ऑफ योर्स माइट हैव प्रिपेयर्ड, माइट हैव मेड प्रिपरेशंस कि आप आने वाले हैं एंड देन ऑब्वियसली यू कांट से नो। नाउ ये कमिटमेंट, बिफोर यू गिव अ कमिटमेंट जस्ट थिंक कितने आवर्स आपको लगेंगे फॉर दैट कमिटमेंट, to keep up this commitment. By the way, you can always call up and say you know what, I have urgent work, but हमेशा जब हम लोग लास्ट मोमेंट फ्रेंड्स को मना भी कर रहे हैं सबको, इट्स अ स्मॉल थिंग, बट गिल्टी फीलिंग किसे होती है, हम लोग को खुद को, बिकॉज वी कमिटेड and then we have to say no and then we only feel bad about it and it definitely drains our energy, it makes us feel drained, it makes us feel low. So अगर आपने उसको बोल दिया कि हम आएंगे और उसने प्रिपरेशन भी कर दिया, आपको जाना भी पड़ेगा, how many hours of commitment is this? Quick question for all of you. Put it in the chat box. How many hours of commitment to go to a friend's place, have dinner, be with that friend, and then come back? कितने hours लगेंगे ये काम करने में? 2 hours? Sure. Maybe 4 hours. 4 hours, I think 4 to 5 hours. No definite answer, absolutely. But अगर वो dinner की बात है तो आप जाएंगे, your travel time, it will take you approximately half an hour to go, half an hour to come, and maybe 1 hour to 2 hours to stay there. So approximately 2 to 4 hours की ये आपकी commitment हो गई. Now on that day अगर आपकी ऑफिस में भी कोई commitment है जिसमें Monday morning you need to deliver a particular project और आपने सोचा था कि नहीं हम weekend पे उसको कर लेंगे, तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये छोटी सी चीज है, बट यू विदाउट थिंकिंग जस्ट गिव अ कमिटमेंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 hours. सो इसी तरह से आपको हर एक्टिविटी के आवर्स कैलकुलेट करने की, अगर आप किसी को कुछ कमिट करते हैं तो उसमें समय कितना लगेगा, हाउ मच टाइम इज दिस कमिटमेंट गोना कॉस्ट यू. Time is also a cost. Any commitment, how much time is it going to cost you? This is the first thing to check. First thing to check. What are other commitments, by the way? Can you give me any more examples where you end up over committing? Now, over commitments अक्सर बहुत ज़्यादा होती है in businesses. I just gave you one example of a relationship, but also sometimes over commitment होता है in relation to business. Now, many times, suppose आप कोई business कर रहे हैं, especially कोई service oriented business, जिसमें आप कुछ services देते हैं clients को, आपने client को बोल दिया कि ठीक है हम आपको ये deliver करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, you gave them few things, and without calculating time, you just told them that okay, I will do it, and you said हो जाएगा जैसे भी, without calculating. Now, whenever you don't calculate time and you commit a deadline, तब आपको perpetually ये problem आएगी in business where you will find it difficult to keep up to your deadlines. Actually कितना बार laziness issue नहीं होता है, इशू ये होता है कि हम उसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. टाइम कमिट करने के पहले हम लोग प्रॉपरली कुछ भी चीज डेडलाइन कमिट करने के पहले वी आर नॉट कैलकुलेटिंग टाइम एंड वी आर नॉट कीपिंग सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर इमरजेंसीज. So in business, whenever you commit a deadline, if you commit a very firm, very strict deadline या cut to cut deadline अगर आप commit करते हैं तो it adds a lot of pressure on yourself. So जब भी आप कोई deadline commit करे in your business, in your profession, always keep a buffer of at least 20%. Like for example, if there is some work which you think कि ये काम हफ्ता भर में हो जाएगा, ठीक है, आपको इंटरनली लग रहा है कि हाँ हफ्ता भर में हो जाएगा, इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो आप उसे डेडलाइन कब का देंगे? व्हाट डेडलाइन विल यू गिव, व्हाट कमिटमेंट विल यू गिव? सपोज इफ नथिंग गोज रॉन्ग, दैट पर्टिकुलर कमिटमेंट टू एग्जीक्यूट इट और दैट पर्टिकुलर टास्क उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कितना समय लगेगा? 8 दिन का, 1 हफ्ता का समय लगेगा, 7 दिन. तो when you are giving somebody a deadline or a commitment, always keep a buffer of 20%.
keep a buffer of 20% whenever you give a commitment. This is rule number 2. First one, check the time. पहला क्या था, मैं तीन चीजें आपसे शेयर करने वाली हूँ. First one, check how much time. Always make it a habit. Make it a habit. Like, I'll just give you a small example. Like today I was in the center, we had work to do and things to do, and suddenly, we had some, suddenly my husband was here and my brother-in-law was here, and they were like, okay, they just felt like going out for lunch. So बोले चलिए बाहर चलते हैं, लंच करने के लिए चलते हैं. लंच करने में तो आधा ही घंटा लगता है. So actually में लंच करने में कितना समय लगता है? In general, obviously आधा ही घंटा लगता है. But if you have not planned well and if you have work to do, then lunch के लिए जाना आना, lunch करने में तो half an hour लगता है. Lunch order करके जब तक खाना आता है उसमें half an hour लगता है. And in a city like Calcutta, आपको anywhere you go, it takes you minimum half an hour to go, half an hour to come back. So what you think sometimes, there is time calculation में गड़बड़ हो जाती है. हमको कहते हैं ओ लंच ही तो है, लंच ब्रेक ही तो है, घर पे भी खाएंगे तो half an hour लगेगा, घर पे खाएंगे तो half an hour लगेगा. But if you go out, it's going to take you minimum 2 hours. Right? So sometimes what happens is when people schedule their meetings, they often say, okay, the meeting is just 10 minutes, I'm there. But then we probably fail to calculate the entire time. Plus, rule number 2, keeping 20% extra time in hand before we make a time commitment. So in such cases, you have to calculate and sometimes just say no. And the third thing, which I just noted down, is learning to say no. Sometimes we just overcommit क्योंकि हमको ना बोलना नहीं आता. मतलब जब माइंड में एक साइड चल रहा है कि ये मेरे से नहीं होने वाला, sometimes you know that it's not possible, but the person who is sitting in front of you, probably out of love for that person or respect for that person, or maybe sometimes fear for that person, आप उस इंसान को ना ही नहीं कर सकते. Now because you cannot say no, you just end up saying yes, and that moment itself the stress starts building up, because already आप जो उसे commit कर रहे हैं, आपको खुद पता है कि आपकी वो commitment over commitment है, लेकिन you don't know how to say no to certain people, and to those certain people we tend to overcommit. So before saying a yes, make sure that you are not saying yes out of pressure, but you're saying yes because you're comfortable giving that commitment and you're happy about giving that commitment. Okay, there are times I have seen, even in today's days, even in the recent days, I've seen people, they even end up sometimes getting married to someone whom they didn't like because they could not say no. ये कितने hours की commitment हो गई है? Can you really calculate the hours? तो हम लोग तो hours भी calculate नहीं कर सकते, उसकी हम लोग अपने पूरी life ही हम लोग ने commit कर दी for something just because हम में capacity नहीं है, strength नहीं है ना बोलने का. बहुत बार बिजनेस में लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं किसी के साथ, क्योंकि ना बोलने की हिम्मत नहीं है, एंड देन we sign documents, we get into relationships, we get into partnerships, we take up positions. हम लोग कितना बार कोई पोजीशन ले लेते हैं, जैसे कोई आपको बोला कि नहीं आप हमारी बिल्डिंग की एसोसिएशन है, आप उसमें प्रेसिडेंट बन जाइए, यू विल डू अ ग्रेट जॉब एंड बहुत अच्छा काम आप करते हैं, आप में बहुत इंटेलिजेंस है. सपोज लोग आपको चढ़ाए जा रहे हैं और आपने वो पोजीशन ले ली. जैसे ही आप वो पोजीशन लोगे, फिर क्या होने लगता है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती है, एंड देन वी फील दैट ओ आई शुड हैव सेड नो. Many times before taking positions, powerful positions, या कोई associations में positions, organizations में positions, sometimes we just get carried away and we take it up without calculating the time, or maybe we under pressure we don't know how to say no. Okay, so 3 things. So to summarize, हम लोग 3 चीजें, कोई भी चीज कमिट करने के पहले 3 चीजें चेक करेंगे. कौन सी 3 चीजें चेक करेंगे? What are the 3 things that we can be aware of or we can check before we commit? What are the 3 things? Let's see who remembers. Yeah, you can put it in the chat box if you remember. Yes, number 1, you will check how much time does it require. ये काम करने में कितना समय मुझे लगता है. Calculate. Have a habit to calculate
that okay, if I give this physical time, yes, Bhumika, right, physical time, kitna physical time mujhe lagega, and before you commit, how much buffer will you keep? Very good. How much buffer? 20% buffer always. 20% buffer always. So check your schedule, check the time involvement, मेक श्योर दैट यू हैव 20% आप बफर रख पा रहे हैं क्या, बफर रख के उतना टाइम आपके हाथ में है कि नहीं, वो आप पहले चेक करिए. वंस यू हैव चेक द टाइम अलोंग विद 20% इंटरेस्ट ऑन इट, उसके बाद you decide whether it is a yes or is it a no. And if you know internally that it is a no, learn to say no. Learn to say no. One of the biggest factors, one of the very important factors is we not being able to say no to people and taking up responsibilities. No, क्या चीज की वजह से हम लोग नहीं बोल पाते? What could be the factors that stops us from saying no? What are the biggest factors? One, it could be out of fear. फियर की वजह से लोग ना नहीं कर पाते कि नहीं यार, मेरे पापा ने मुझे बोला है, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरी मदर ने मुझे बोला है, मुझे करना ही पड़ेगा. One can be out of fear, it can be out of respect, it can be out of love, it can be out of any of these pressures. But anything under pressure, it will only build up stress, और वो commitment हमेशा later it will feel only an overcommitment. So number one, calculate the time. Number two, add 20% buffer to it. Then you schedule it. Then you check that do you have that kind of a time. And then number three, if your heart says or if your calculation says that it's a no, you stand up for your no. If you internally feel it's a yes, you stand up for your yes. Okay. Now another small tip before we close, कि जब आप कमिट करते हैं और देयर इज समथिंग कि आप दिल से करना चाहते हैं, मींस इट इज नॉट अ नो बट इट्स अ यस, बट जो भी आपको टास्क मिल रहा है, मे बी इट इज अ पोजीशन और अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो भी आपको काम मिल रहा है, यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बट यू डोंट हैव द टाइम, बट इन योर हार्ट इट्स अ यस, तब आप क्या करोगे? क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू बिफोर वी क्लोज. ऐसी बहुत बार सिचुएशंस आती है ना, आप करना चाहते हैं लेकिन टाइम आपके पास नहीं है. In your heart, deep down in your heart, you really want it to do. You don't want to say no. Then what will you do? Then you have to recalculate, reprioritize, reschedule. You know, जो हम लोग ने पहले कल के 2 सेशंस में डिस्कस किया था, yesterday and day before yesterday, you have to change your priorities. You have to be mentally prepared that कोई चीजें आपको eliminate करनी पड़ेगी ये नई चीज की जगह बनाने के लिए. In your schedule you will have to let go of something to make time for the new thing which is so close to your heart. Then you need to check कि मुझे क्या निकालना है अपने लाइफ से, कौन सी unnecessary चीजें मुझे निकालनी है. Like for example, you suddenly realize that you need to meditate and you need to meditate longer, और आप जब अरातिक वगैरह कर लेते, you realize you need 1.5 hours or 2 hours of practice time. Then you need to eliminate. You need to sometimes eliminate the gossip phone calls. You need to eliminate unnecessary jobs that you do. You need to delegate some work. You have to play smart. So या आपको कुछ काम delegate करना पड़ेगा, कुछ काम eliminate करना पड़ेगा, ताकि आपकी priority ये एक नए box में fit हो सके. So if you are adding something new which is so much to your heart, make sure what do you do? Few things you will have to put in 2 boxes, either eliminate or delegate. कुछ ऐसी चीजें जो आपको डेलीगेट करनी पड़ेगी या आपको कुछ चीजें हटानी पड़ेगी अपने चेकलिस्ट से, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से. You will have to let go of it to make time so that you keep up to your commitments. All right, so that's it for today. I hope you enjoyed this little sharing. And I hope this will help us organize our time better. Now that most of us are back to work, most of us are safe and back to work, which is amazing. But yes, definitely we had a very relaxed time. But now there are many responsibilities. So let's continue to manage time. And I really feel time is one of the biggest resource given to us by God. Let's use it wisely and let's definitely not waste it, because whatever we waste is taken away. And time एक बहुत बड़ा resource है
more than anything else. So we need to become more efficient in our time management. All right. So thank you very much for joining in. Let's close with an invocation. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to Master Choa Kok Sui, to Lord Mahagurji Mailing, to all the great, great ones. Thank you for blessing all of us with the ability to manage our time efficiently, properly. Thank you for giving us the ability to prioritize. Thank you for blessing us with accurate perception so that we may put up the right priorities for the right jobs. Thank you for helping us with the ability to eliminate unnecessary things, unnecessary tasks. Thank you for helping us see what things can be delegated or outsourced so that we use our time efficiently. In full faith, so be it. Gently open your eyes. Thank you very much for joining in. Atma Namaste.